Can you see the screen? Yes, sir. जी डॉक्टर जमाल जी ठीक है. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Jamal Khan, consultant anesthetist at PF Hospital. Today we will be discussing infraclavicular brachial plexus block ultrasound guided. Before I start, I want to thank our guests, Professor Salman Ahmad Salim, Head of Department, Pain Management Center, Shifa International, Islamabad, and Colonel Dr. Sami Wahid, Head of Department, Anesthesia, ICU, and Pain Management Center, CMH Karia. We have other seniors and teachers joining us as well. Okay. Now coming to the infraclavicular brachial plexus block. Before we start discussing infraclavicular brachial plexus block, we will go a little in the details, a little minor details of the previous blocks we have discussed and how this brachial plexus is formed. Brachial plexus is formed by the nerve roots emerging from the cervical vertebrae, and these nerve roots then transform into trunks at the trunks and divisions at the supraclavicular region. Then further they transform into cords at the infraclavicular region, and then into terminal branches of the brachial plexus at the axilla. And then these terminal branches keep traveling down the hand and supplying the whole upper limb. As we can see in this illustration, there are 4 different figures. In figure A, we can see the interscalene approach or the interscalene block at the nerve root level, and the shaded area in the illustration or the image above is the area that is blocked by the interscalene block, brachial plexus block. Which area is spared? The axilla and the medial or the ulnar part of the hand is spared in interscalene block. Then is the supraclavicular approach of or supraclavicular brachial plexus block. As we can see the shaded area of the upper limb, the shoulder sparing the axilla and then the whole upper limb, it is blocked in the supraclavicular approach. Then is the infraclavicular. In infraclavicular, the whole upper limb down the axilla is blocked. Then is the axillary brachial plexus block. In axillary brachial plexus block, there is the sparing of the lateral part of the forearm, which is supplied by the musculocutaneous nerve, and to make a complete block of the forearm, we need to block additionally musculocutaneous nerve ultrasound guided. Now coming to the infraclavicular block. Infraclavicularly or below the clavicle, this brachial plexus is transformed or is in the shape of or already transformed into cords, and these cords are surrounded around the axillary artery. They form the lateral cord, the medial cord, and the posterior cord. Now it is very important to know which cord forms which nerve and how it supplies the upper limb. First of all, the lateral cord. Lateral cord gives branches lateral pectoral nerve, musculocutaneous nerve, and lateral root of the median nerve. Then is the medial cord. It gives medial pectoral nerve that supplies the pectoralis major and minor, the medial root of the median nerve, the medial cutaneous nerve of the arm and forearm, and ulnar nerve. Then is the posterior cord. Posterior cord gives upper scapular nerve, lower scapular nerve. The upper scapular supplies the upper part of the subscapularis, and lower scapular nerve supplies this lower part of the subscapularis. Then is the thoracodorsal nerve, latissimus supplies the latissimus dorsi, and axillary nerve that supplies deltoid and teres minor, and then is the radial nerve. Now, what are the indications for infraclavicular brachial plexus block? Any surgery of the arm distal to the axilla is an indication for the infraclavicular block. It's a good choice for catheter placement, for giving prolonged analgesia to the
arm and forearm, because the pectoralis muscles holds the catheter in place. And shoulder is not involved, as shoulder is innervated by superficial cervical plexus, C1 through C4. Axilla and proximal arm, if want to be blocked, requires an additional intercostobrachial nerve block. Okay, there are three different approaches to the infraclavicular block, infraclavicular brachial plexus block. First is the classic infraclavicular approach, that is also known as the coracoid approach. Then is the costoclavicular approach. And third is the raptor. Raptor approach is a kind of new approach. Raptor means retroclavicular approach to the infraclavicular region. Now, if we see closely this classic approach, we can see the probe. That is, the probe is kept medial to the coracoid process, and the needle can be seen coming in with in-plane approach, but below the clavicle. We can see the needle insertion is below the clavicle. Its indications are analgesia or anesthesia at arm, elbow, forearm, and hand surgery. Transducer position, since it's a superficial block, the preferred transducer is the linear probe. So the probe is approximately parasagittal, just medial to the coracoid process and inferior to the clavicle. What are the goals, or how we assure or we confirm that enough area has been given the drug? It is the local spread around the axillary artery. That is also known as a sausage sign. And the local anesthetic volume ranges from 20 to 30 ml. As we can see, now this is a colorful illustration of the muscles that we see. We can see with the probe, with the classical approach or the coracoid approach, we will see the pectoralis major superiorly, then a facial plane, and then below that a pectoralis minor muscle. And below that, we will see a pulsating round structure that we will confirm with a color flow, that is the axillary artery. With the axillary artery, around the axillary artery, we will see three different white or hyperechoic structures. On the lateral side will be the lateral cord. Below the axillary artery will be the posterior cord, and medial to the axillary artery will be the medial cord. And we will also see the axillary vein. Now, this is the sona anatomy that we are supposed to see to confirm that the probe position is right and all the structures are identified well. And now we can insert the needle to give the drug at appropriate position and to reach the drug at the appropriate location and block the cords. We can see superiorly the PMAM is actually the pectoralis major muscle. Below that is the pectoralis minor. Then is the facial plane, and then is the axillary artery. Now, around the axillary artery, we can see the lateral cord, the LC. Then is the posterior cord, the medial cord. And medial to the axillary artery or medial to the medial cord is the axillary vein. So the artery and vein are present. The artery is laterally and the axillary vein is medially located. Now this is with figure A, we can see this is the classic coracoid approach. And with figure B, we can see that the needle is inserted on the right side, the figure B, we can see the needle is inserted a little far away. Actually, it is far away because this approach is actually the raptor approach, the retroclavicular approach to infraclavicular region. The probe is at the same position at the infraclavicular area, but the needle insertion is below the clavicle. We take the needle above the clavicle and we move it down below the clavicle to reach this area, to reach the same area of the classic, with the classic approach. Now, what are the indications?
As we already discussed, anesthesia to the forearm, wrist, and hand, analgesia to entire arm, including humerus below the shoulder joint, combined with the suprascapular nerve block for shoulder analgesia. Positioning is the patient is supine with head turned to the contralateral side and pillow behind the thoracic spine. Abduct and externally rotate the shoulder if possible. Volume is 20 to 30 ml. While the side effects are the muscle weakness of arm and hand for quite some time, its complications are the same as for the other brachial plexus block, like the pneumothorax, vessel puncture, or vessel drug into the vessel, inadvertent arterial injection, intravascular injection, brachial plexus injury, and obviously failed block. If you miss the right spot, you are going to deposit drug elsewhere and it's not going to be effective. And all the preparation done for the surgery will be in vain. And you may change your mode of anesthesia. You may go for GNN. Now this is the costoclavicular approach. This is, as we already discussed, the classic approach and the Raptor approach. This is the costoclavicular. What's the difference between the costoclavicular and the classic or coracoid approach? In costoclavicular, the probe can be seen kept parallel to the clavicle. And on sonanatomy, we will see the pectoralis major muscle, and the SCM is the subclavius muscle. And then the axillary artery, and then the structures, the posterior cord, the lateral, and the medial cord. Serratus anterior can also be seen on the lateral end. This is the medial to lateral approach. With the costoclavicular, the whole bunch of the nerve plexus will be on the lateral side of the axillary artery. They will not be around the axillary artery. They will be found lateral to the axillary artery, as it can be seen very clearly here. Okay, with brachial plexus costoclavicular, anesthesia to the forearm, again the same for the infraclavicular, wrist or hand, and analgesia to entire arm below the shoulder joint. It's combined with suprascapular nerve block for shoulder analgesia. In this position, patient is supine with head turned to the contralateral side and pillow behind the thoracic spine. Arm abducted or reducted. The volume is lower than the infraclavicular, it's 15 to 20 ml. Side effects includes dyspnea from phrenic nerve block and weakness of arm and hand muscle. Okay, this dyspnea from the phrenic block is possible, but it's not that obvious, or it doesn't happen with every block. It's one of the side effects if found, so it can be related. Complications includes the pneumothorax, vessel puncture in non-compressible location, intravascular injection, brachial plexus injury with direct needle insertion. The Raptor approach, as we already discussed, it is the retroclavicular approach to the infraclavicular region. Okay, we can see on the left side, if you see the infraclavicular, the classic approach, you can see the needle insertion or the needle angle is very steep. This median angle of insertion is 50 degrees on average, but it ranges from 33 to 60 degrees. And if the patient is obese, so it can be worse. So the needle visualization in the classic approach is often poor because of the steep angle of insertion with the conventional this classic approach. So what has been newly tried, that with the Raptor, this angle is reduced, and as with the ultrasound, as we reduce the angle, we can see more of our needle, and the needle can be seen, more length of the needle, tip of the needle, and the visualization of the needle gets much better. Now this is positioning for the Raptor approach. Head of the bed is elevated, head turned away, arm abducted, and there is a little bump under scapula or on the thoracic region. Now we can see the needle insertion.
the needle is inserted above the clavicle so that it should move down the clavicle. It is inserted above the clavicle so that when we move the needle down, it should be moving below the clavicle to reach the cords of the brachial plexus at the uh, at the required area, as it can be seen here. Now this is again the shown anatomy in which it can be seen the pectoralis major and minor muscles, lateral cords, the needle direction. As we can see, the needle direction, its angle is very much reduced. In the clavicle, this black shadow that is already marked, that is the clavicle. Bones are usually seen black with their prominent white reflecting surface. What are the challenges for this raptor approach? It can be challenging if a non-compliant or if the patient is non-compliant, and you can, while passing through the clavicle shadow, there will be there below the shadow you may not see the needle, and there is potential of trauma to the other structures. Thank you. Now we will be moving to another screen, and now there will be a live demonstration of the सर आप काइंडली अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करें, फिर मैं जमाल 2 की स्क्रीन को पिन करती हूँ ताकि सब लोग उसको देख सकें। जमाल जी सर, बस ठीक है। नहीं, मैंने कहा मेरे पास आवाज नहीं आ रही, शायद विजिबल है, क्रिस्टल क्लियर है पल्सेशन। Okay, excellent. Now I have this stellate. This is the lateral cord. This is the posterior cord, and this is the medial cord. As you said, medially we are going to find the axillary vein. It should be here. This is the axillary vein. इस ब्राइटनेस की वजह से नर्व्स क्लियर नजर आ रही है। हाँ, लेकिन ये है कि आर्टरी के इस तरफ चारों जो तीनों कॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। एक्सीलेंट। Pectoralis major. This is the pectoralis minor, the fascia between the major and minor. This is the fascia, and below this is the axillary artery. The lateral cord, the posterior cord. Okay. So what will be our approach? Our approach will, it's a little steep if you go below the clavicle in infraclavicular. Now I'll show you. Now, if you see, this will be the needle approach. This will be the needle approach. You see how big the angle is? It's usually 33 to 60, but on average it is 50 degrees. But as we go a little, so we usually don't see the tip of the needle. So with the raptor approach, probe will be here, but we will go below the clavicle. Now this is the fossa, and we will go below the clavicle to reach this area. Okay. Now coming to the costoclavicular approach. Look at the probe. I am turning it. This is the probe. Now I'll be showing you what we are going to see on the screen. We are going to see the cords lateral to the ciliary artery. Anyone who can see, yes, they can see it. I'll show you the bunch of cords. Currently they are here.
This is the pectoralis major muscle. This is the subclavius muscle. And these are the chords. 1, 2, 3. You can see they are kind of aligned. Let me turn on the color flow. Will help us. So this is the lateral approach or the cost of clavicle. अगर आप लोगों में से किसी को सोनोनैटमी की समझ नहीं आई तो डॉक्टर जमाल आपको दोबारा डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। अगर आप लोग दोबारा देखना चाहते हैं इनमें से दोनों अप्रोचेस में से तो आप लोग काइंडली बता दें। जी चलें, अब आप लोगों के पास किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो डॉक्टर जमाल भी हमारे साथ अभी मौजूद है और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अहमद सलीम भी मौजूद हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। और हम एंड पे सर से कमेंट भी लेंगे और सर की ओपिनियन जानना चाहेंगे इस सारे सेशन के बारे में। Ma'am, I have a question. जी Dr. प्लीज। Jamal, जी am I प्लीज। audible? जी जी sir, बिल्कुल sir. बिल्कुल। If a master trainer like Jamal is going to block, which approach he will choose? Like a patient he is having now, either infraclavicular, raptor, or costoclavicular. Sir, I will go with the coracoid or the classic approach. But as I said, yes, infraclavicular. All are the infraclavicular because the chords are below the clavicle. But the needle I will go with the classic approach. But if I do not find the tip of my needle, sir, this is very important now. If I do not find the tip of my needle in ultrasound, it is not visible to me. As I earlier have said, if we do not see tip of our needle, we are not going to take the needle any forward, and we are not going to deposit any drug. So if I do not, and as we increase the angle of the needle, so there are more chances we are going to lose visibility of tip. But if I do not see the tip of needle, I will go with the lateral approach. The lateral, that is the costoclavicular. Yes. And then I will go with my third option will be the raptor. For the reason, because as I go below the clavicle, all that time or that area below the clavicle is my needle is going to travel blind. Because there is a deep shed of the bone, the clavicle, I will not be able to see my needle. And I do not want to have any part of my procedure having my needle not completely visible. So I will avoid the raptor. Fine, sure. Thank you. Sir Jamal, Assalamu alaikum. Sir, salam, sir. सर आवाज आ रही है? जी जी सर। जी सर, एक क्वेश्चन है, मैं काइंडली बताएंगे कि लोकल एनेस्थेटिक चॉइस क्या होगी हमारी नॉर्मल? एक अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ऑर्थो सर्जरी करा रहे हैं 45 मिनट्स टू 1 आवर की, तो हम क्या लोकल एनेस्थेटिक प्रेफर करेंगे ब्लॉक के लिए? Hello, am I audible? 30 मिनट्स कर सकते हैं। Bupivacaine is best. Bupivacaine है सर, लेकिन का तो इतना इफेक्ट नहीं है। तो और सर उसको क्या परसेंट, 0.25 या प्योर 0.5% लगाएंगे? सर दोनों कर सकते हैं, 0.25 और 0.5 के बीच में भी कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर डेंस ब्लॉक चाहिए तो यू गो विद द 0.5%। थैंक यू सर। जी सर। सर इसमें नीमोथोरिक्स के चांसेस कितने ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सुप्राक्लेव? अच्छा सर, एज कंपेयर टू सुप्राक्लेविकुलर इसमें न्यूमोथोरैक्स के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि सुप्राक्लेविकुलर में हमें प्लूरा नीचे नजर आती है, लेकिन इसमें हमें इसकी ये कॉर्ड्स ऊपर पड़े होते हैं कंपैरेटिवली, और सेफ भी हैं, सारे नजर भी आते हैं। तो यहाँ पे प्लूरा थोड़ी सी नीचे होती है। इट इज कंपैरेटिवली इट इज सेफ,
और इसकी जो प्रेफर्ड यूज जो है इसका, दैट इज कैथेटर प्लेसमेंट, क्योंकि मसल्स की ये मसल्स उसको टाइट रखते हैं कि कैथेटर को उसको मिसप्लेस नहीं होने देते, या कंपैरेटिवली देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी वल्नरेबिलिटी ऑफ द कैथेटर मिसप्लेसमेंट अपर लिम्ब सर्जरीज के बाद, अगर आपने पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया देना या कुछ ऐसे और कंडीशंस में परसिस्टेंट पेन है तो उसमें आप Yeah, this कैथेटर is रख the good advantage of the और ये catheter. और ये जो तीनों अप्रोचेज हैं, इनमें से मिनिमम चांसेस ऑफ नीमोथोरेक्स किसमें? सर मिनिमम इनमें जो है वो लेटरल अप्रोच की है, दैट इज द कोस्टोक्लेविकुलर अप्रोच की है। ठीक ठीक, सेकेंडली थैंक यू। सर एक और चीज भी, जो ब्लॉक्स के डिफरेंट, एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस फॉर फ्यू रीजंस होता है। एक रीजन तो ये कि विच पार्ट ऑफ द लिम्ब यू वांट टू ब्लॉक। सेकेंड रीजन ये है कि मल्टीपल इंजेक्शंस, अब जिस तरह एक्सिलरी भी है, यू कैन ब्लॉक द अपर लिम्ब बिलो द एल्बो टू द हैंड अप टू द हैंड, और साथ में मस्कुलोक्यूटेनियस भी ब्लॉक करके कर सकते हैं। फिर इंजेक्शंस का भी होता है, मल्टीपल इंजेक्शन की तरफ अगर आप जाते हैं उसमें आपको मल्टीपल इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। एक्सिलरी में ये सिंगल इंजेक्शन लगा सकते हैं, और इसमें अगर आपने सिंगल इंजेक्शन लगाना है तो आपने पोस्टीरियर कॉर्ड तक नीडल लेके जानी। इट्स नॉट लाइक के लेटरल में दे दी दवाई तो उसमें फिर मीडियल हाफ मिस हो जाएगा, या मीडियल से दे दी तो लेटरल हाफ मिस हो जाएगा। तो बेस्ट है कि पोस्टीरियर कॉर्ड तक जाकर वहां पर ड्रग दें, एंड द ड्रग शुड मेक अ सॉसेज साइन, सी साइन कह सकते हैं, सॉसेज साइन। We have a very nice video made that we will share in a while in group, that is edited by Dr. Saira, and she will share it. उसमें प्रोसीजर भी हो रहा है, और साथ में प्रोसीजर के साथ साथ जो है हमने उसको आइडेंटिफिकेशन और साथ में एडिटिंग की हुई चीजें नजर भी आ रही, सॉसेज साइन, ड्रग एक्सपेंशन और साथ। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी शो कर दूं, अभी तो हमारा सेशन चल रहा है और बाद में मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो मैडम अगर बस अभी आप क्वेश्चन है। लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क। और जी सर, एक क्वेश्चन था। जी जी सर। सर, ये आपने कोस्टोक्लेविकुलर अप्रोच सेकंड नंबर पे रखी, जबकि उस पे आपने कहा है कि निमोथोरेक्स के चांसेस भी कम है और हमें लोकल एनेस्थीसिया भी उसमें कम देना पड़ता है। व्हाई नॉट ऑन फर्स्ट प्लेस? अच्छा, व्हाई नॉट ऑन फर्स्ट प्लेस? सर उसकी रीजन ये है कि यूजुअली लीनियर, जो इसका जो क्लासिक अप्रोच है, जो इस ब्लॉक का जो क्लासिक अप्रोच है, उसमें एग्जैक्ट पोस्टीरियर जो एग्जैक्ट सॉसेज साइन जो है दैट इज क्लियरली विजिबल। उसमें अगर आप उस पे आते हैं, जो क्लासिक अप्रोच में पोस्टीरियर कोट का की एंगुलेशन लेकर वहां पे आप ड्रग डिपॉजिट करते हैं तो क्लियरली आ जाता है। जो लेटरल अप्रोच है, इसमें जो कि पूरा नर्व प्लेक्सस साइड पे पड़ा होता है, लेटरली टू द व्हाट वी कॉल एक्सिलरी आर्टरी, तो उसमें देर आर चांसेस कि उस प्लेक्सस या वो जो ग्रुप पड़ा हुआ है तो उसके जो उसका मीडियल एंड है तो वहां पे ड्रग मिस हो जाती है। वी कैन गो फॉर बोथ, लेकिन इफ यू आस्क मी के विच अप्रोच, तो इंफ्राक्लेविकुलर जो है, जो इसका क्लासिक अप्रोच है, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। हर अप्रोच की फिर लिमिटेशंस भी हैं। और सेकेंडली इसमें न्यूमोथोरेक्स के चांसेस जो हैं उसमें, सर माय फर्स्ट वो जो है माय फर्स्ट चॉइस दैट इज द लेटरल अप्रोच, ये जो कोस्टोक्लेविकुलर है। उसकी रीजन ये है कि कोस्टोक्लेविकुलर से आपको न्यूमोथोरेक्स के चांसेस कम होते हैं। जो बाकी दो हैं, यू गो, आपकी नीडल डीप जा रही होती है, इट डज नॉट ट्रेवल अलोंग द, आपने थोड़ा सा डीप एंगल देना होता है, एक में कम देना है, एक में ज्यादा देना है। एक जिसमें आप ज्यादा एंगल दे रहे हैं तो यू आर गोइंग टू पंक्चर द प्लूरा, और जिसमें आप कम दे रहे हैं तो उसमें आपका ऐसा एरिया आता है जिसके नीचे जो है आपकी जो रैप्टर है, जिसके नीचे आपकी नीडल मुकम्मल ब्लाइंड होती है, यू कैन नॉट सी योर नीडल टिप। तो इसलिए माई फर्स्ट वॉज द जो कोस्टोक्लेविकुलर अप्रोच, एंड माई सेकेंड इज द कोराकोइड अप्रोच है सर। थर्ड पे फिर रैप्टर है, अगर बिल्कुल नहीं होती। सर आई होप आई एम क्लियर, इफ नॉट आई कैन रिपीट। जी सर। सर हमारे साथ डॉक्टर सलमान भी मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अहमद सलीम।
ही इज HOD शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। और अगर सर कोई कमेंट करना चाहें या सर की कोई सजेशन हो, सर We would like to hear from sir. जी सर। Assalamu alaikum, everyone. अस्सलाम वालेकुम सर। I'm thankful to the organizers to invite me here in this excellent, beautiful session. मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ मैंने सुना, और फिर आप लोगों का इंटरेस्ट और क्वेश्चनिंग जबरदस्त थे, और डॉक्टर जमाल ने जो प्रेजेंट किया वो भी बहुत अच्छा था, और उनकी टेक्निक्स माशाल्लाह और नॉलेज भी बहुत अच्छा था। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं जो क्वेश्चंस लोग कर रहे थे, मैं जरा थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर लूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि विच टेक्निक इज गुड फॉर दिस ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक। तो मेरे ख्याल में कि जो टेक्निक आप कॉमनली यूज करते हैं, जिसमें आपकी परफेक्शन है, जिसमें आप कॉम्पिटेंट हैं, मेरे ख्याल में आपको इनिशियली वही यूज करनी चाहिए। देन यू शुड लर्न द अदर टेक्निक्स। जब आप उसमें कॉम्पिटेंट हो जाए तो फिर चॉइस की बात आती है। दूसरी बात यह है कि अब आपने ये भी देखना है कि आप सर्जरी के लिए कर रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक, या पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं। अगर आप सर्जरी के लिए कर रहे हैं तो फिर आप डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, सस्पेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, आप ब्लॉक टाइम को देखते हुए आप ऑप्ट करेंगे, और अगर लंबी सर्जरी है तो फिर कैथेटर डालेंगे। और अगर आप पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए कर रहे हैं तो फिर शुरू में ही आपको कैथेटर डाल देना चाहिए, और कैथेटर के साथ आपको पोस्ट ऑपरेटिव सिरिंज पंप से, या फिर 8 आवरली बोलसिस के साथ आपको बीपी वगैन इंजेक्ट करना चाहिए। और इंफ्राक्लेविकुलर अप्रोच, इट इज बेस्ट फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म एंड हैंड सर्जरी। क्योंकि यहाँ पे जैसे जमाल ने भी बताया था कि कैथेटर प्लेसमेंट और उसके डिसलॉज होने के चांसेस वो सबसे ज़्यादा कम होते हैं बाकी अप्रोचेस की निस्बत। सुप्राक्लेविकुलर और इंटरस्केलिन में यूजुअली बहुत जल्दी कैथेटर डिसलॉज हो जाता है। यहाँ पे मसल्स उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, और 3-4 डेज के लिए आप आराम से उसको रख सकते हैं। हम लोग इसमें 0.1 to 5% ब्यूपीवाकेन, उसमें फेंटानिल 2 माइक्रोग्राम पर ml, जितना वॉल्यूम हम यूज कर रहे हैं उससे वो डाल के हम कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन में देते हैं सिंज पंप के साथ। ये हमारी कॉमन रूटीन है जो अपर लिम्ब की सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। अगर कुछ और मुझसे पूछना चाहें तो ऑल ऑफ यू आर वेलकम। आप में से किसी और ने अगर कुछ पूछना हो, या डॉक्टर जमाल आपने सर से कुछ आपने कुछ कंफर्म करना है अबाउट एनीथिंग अबाउट द, खास तौर से जो आपकी रैप्टर जो है अप्रोच है वो बिल्कुल न्यू है। इससे पहले आई थिंक बहुत कम लोगों ने सुना होगा। मैं चाहती हूँ कि सर उस पर कमेंट करें, और अगर सर का इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस है तो सर शेयर करें काइंडली। I would like to ask Sir Salman. Sir, जी first of all, again, thank you so much for being here and your valuable comments. Sir, with Raptor approach, sir, how good it is? Because we थैंक get यू a blind area. We get a blind जी area in which we not see our needle tip. जी थैंक यू वेरी मच जमाल। Sir, डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो बहरहाल इस सवाल का जवाब जो है ये है कि हमने अभी तक जो हमारा ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो क्लासिकल अप्रोच के साथ ही है, और उसमें बाज़ औक़ात नीडल इतनी स्टीप होती है कि उसमें नीडल टिप का नज़र आना मुश्किल हो जाता है। तो उस वक्त रैप्टर अप्रोच वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और ज़्यादा मेरे ख्याल में उस वक्त बेहतर है कि आप टेक्निक चेंज कर लें। अदरवाइज यू शुड स्टार्ट विद द क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में दूसरा एक और भी प्रॉब्लम है कि समटाइम्स वेसल्स, एक आर्टरी और एक सेफलिक वेन, ये बिल्कुल आपके जो है ना पोस्टीरियर कार्ड के नीडल के रास्ते में आती हैं ये दोनों चीज़ें समटाइम्स। अगर ये आप देखें, कलर फ्लो डाल के देखें वेसल और
वेन और आर्टरी आपके रास्ते में आ रही है तो उनके पंक्चर होने का फिर काफी ज्यादा चांस होता है, तो फिर टेक्निक चेंज कर ले। तो ये दो इंडिकेशंस है मेरे ख्याल में कि एक तो वेसल्स रास्ते में आ रही हो, और दूसरा आपको नीडल टिप नहीं नजर आ रही, पेशेंट ओबीज है, स्टीप बहुत ज्यादा, नीडल ट्रेजेक्ट्री बहुत ज्यादा स्टीप हो रही है, तो फिर आप रैप्टर अप्रोच पे चले जाएं। अदरवाइज क्लासिकल अप्रोच इट्स क्वाइट गुड। Thank you, sir. It means we can add an additional step to the procedure, that while doing this procedure, we have to keep the color flow turned on to avoid vessel injury on the way to reach the target area. Thank you, sir. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मैं डॉक्टर साकिब बोल रहा हूँ सऊदी अरब से, मक्का से। और डॉक्टर जमाल जो हैं ये Sir, Assalamu मेरे alaikum, sir. अस्सलाम शागिर्द वालेकुम भी हैं सर। और मेरे दोस्त भी हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और डॉक्टर सलीम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ डॉक्टर जमाल की जितनी भी एफर्ट्स हैं, माशाल्लाह ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब। और बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है माशाल्लाह। और प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखें, और इंशाल्लाह लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है और फ़ायदा होगा भी। तो मेरा जो जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो दो तीन कमेंट्स आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारा जो है ना, ये ट्रॉमा हॉस्पिटल है, अल नूर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है मक्का में। और हमारे पास ज़्यादा ट्रॉमा के, ऑर्थोपेडिक के ये ज़्यादा केसेस होते हैं, प्लास्टिक के। तो हम लोग जो है और इसी तरह से ये वास्कुलर में जो एवी फिस्टुला के जो केसेस होते हैं, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज वाले, उनके जब करना होता है तो उनके लिए रीजनल जो है वो हम जो है सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम इसको ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक को यूज़ करते हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। एनल्जीजिया के लिए, यानी जनरल एनेस्थीसिया प्लस एनल्जीजिया, और एनेस्थीसिया के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो आपने एनल्जीसिया के लिए यूज़ करना है वो 0.25% या लेसर कंसंट्रेशन आप यूज़ करते हैं। और जब आपने एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करना है तो फिर आपने 0.5% जो है ना वो कंसंट्रेशन यूज़ करनी है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो है वो जो सर्जरी है वो यानी ह्यूमरस एंड बिलो है, तो फिर आप जो है वो ह्यूमरस या ऊपर आर्म के ऊपर है तो फिर आपने सुप्रा क्लेविकुलर अप्रोच से जाना है। और अगर ये एल्बो एंड बिलो है तो फिर आप ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक प्लस मस्कुलोक्यूटेनियस ब्लॉक आप दे सकते हैं टू प्रिवेंट द टूनिके पेन। तो ये जो चीज़ें हैं और दूसरा ये है कि जो जमाल ने बहुत अच्छी बात की है कि इफ़ यू कैन नॉट विजुलाइज द टिप ऑफ द नीडल, डोंट मूव द नीडल। ये असूल आपने हमेशा याद रखना है। और जितने भी जूनियर्स हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि प्रैक्टिस 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 एंड डोंट बी शाय एंड बी सेफ। जब आपको ना समझ आ रही हो तो डोंट इंजेक्ट एनीथिंग, और ऑलवेज एस्पिरेट बिफोर इंजेक्टिंग, एस्पिरेट बिफोर इंजेक्टिंग। और अच्छा, एक और पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो लिपिड मल्शन है वो अवेलेबल होनी चाहिए। जब भी आप बिपिवाकेन को ब्लॉक्स के लिए यूज कर रहे हो हाई वॉल्यूम में, तो आपके पास लिपिड एमल्शन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए उस सोटी कम्प्लेक्स में, सो दैट अगर एनी टाइम किसी वक्त भी लास्ट होता है तो यू कैन रिवर्स इट विद लिपिड इन्फ्यूजन इमीडिएटली। क्योंकि और कोई उसकी एंटीडोट नहीं है उस तरह से, एक्सेप्ट कि आप जो है ना वाइटल को सपोर्ट कर रहे होते हैं या सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यही मेरे थोड़े से कमेंट्स हैं, और जमाल के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं भी हैं। और ये मेरे इज वेरी नियर टू माय हार्ट। और तो तो आप सब के लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे पाकिस्तान में, और आप इसी तरह से ह्यूमैनिटी की खिदमत करते रहें और जोशो जज्बे से।
और कीप लर्निंग और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और आप शुरू करो, और बेहतर है सुपरविजन में करें पहले, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंटली करें और किसी टीचर से हैंड्स ऑन करें, ताकि आपको वो चीज़ें प्रोब को पकड़ना किस तरह से और नीडल को लेके जाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साकिब, बहुत खुशी हुई आपकी आवाज़ सुन के काफ़ी दिनों के बाद। सर थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे सर। Sir Saqib sir, thank you so much for being here and honoring us. I want to mention it here, as I always and everywhere mention it. Whatever good in regional anesthesia I am today, it's because of Sir Saqib, and I have been a trainee to him. And सर ने ही हमें अंडर सुपर, जिस तरह सर ने सारा बताया, तो ट्रेनिंग में भी सर हमें यही सिखा देते हैं कि पेशेंट को हार्म नहीं करना, अंडर सुपरविजन हैंड्स ऑन सारा करने के बाद देन यू गो फॉर द रियल ब्लॉक और फिर इंडिपेंडेंट। तो सर ने ही हमें मौका दिया, वरना ट्रेनीज को यूजुअली इतना एक्सपोजर कोई इतने आराम से नहीं देता। तो मैं हर जगह पे ही कहता हूँ कि इन वट एवर गुड आई एम टूडे इन रीजनल, इसमें सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा जो है सर साकिब का रोल है, फॉर बीइंग आवर सुपरवाइजर एंड गिविंग अस अ बिग सपोर्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सर थैंक यू सो मच सर। वेलकम, थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू। जैसे मेजर, माइनर, आर्टरी, यहाँ पे ये वाइट नज़र आ रहे हैं, ये हमारे हुए हैं, और ये भी है। We will come from here, deposit here, it will go like this in U-shape manner from here to here.